ये बोलते हैं ये Mr. Counsel, you have been a practitioner of this court. Yes, my lord. For how long? More than 20 years, my lord. You understand the decorum of the court. चल रहा है. We'll direct the superintendent of police to take you into custody straight away. My lord, and my produce you before the lord, court. I have written in paragraph so my lord, हुजूर पढ़ के सुनाते हैं. पेज 24 पर हुजूर पढ़ के सुनाते हैं. ये कहे हैं अभियुक्तगण जिस पर मैंने केस किया है नीचे में हुजूर प्रति परीक्षण में हमारे अगेंस्ट पे हुजूर कुछ नहीं है. आपके अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा है. हमने आपकी प्रैक्टिस को डेप्रिकेट किया है. आपसे हमने पूछा, आप 20 साल से ऊपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं. दिस इज नॉट द वे यू ऑपरेट इन द कोर्ट. दिस इज नॉट द वे. You asked for withdrawal. We granted that permission. My lord, I instructed my client, from my client, there was no instruction given to another counsel for taking withdrawal of the petition, my lord. I was not in that case, my lord. My lord, application for anticipated. It's a very bad practice, Mr. Counsel. Whoever you are, whoever had argued on my the lord, occasion. हम नहीं थे. It's a very, despicable practice, so to say. But nonetheless, my lord, since you had not instructed your lawyer to withdraw, we will hear you. And taken withdrawal, my lord. I was not in that case, my lord. That's right. You should not have agreed to argue this case. Yes. Because a lawyer would not withdraw a case without the instruction. But nonetheless, you argue. Yes, my lord, application for anticipated bail on new facts under section 147, 148, 341, 333, 307, 329, 504, 506 of IPC, my lord. My lord, FIR against 10 named accused and 20 to 25 unknown persons, my lord. My lord, petitioner has got no any criminal antecedent, my lord. Petitioner, the 2-day delay in lodging FIR, my lord. Petitioner is named accused in this case on the point of enmity due to earlier land dispute running in between their Gotia, my lord. My lord, general and omnibus allegation against all the persons with further allegation of blowing farsa upon Mukesh Kumar Rai, causing head injury upon his head, my lord. My lord, there is contradiction in the statement of informant in FIR to that of his statement in session trial examination in ST number 253/2021, in which he did not support the prosecution case and told that both the parties are agonists Gotia to each other, having old line dispute, my lord. यही कहा है. And compromise भी हुजूर हो गया है. Annex 3 हो देख लिया जाए हुजूर. इनका स्टेटमेंट हम पढ़ के सुनाते हैं हुजूर. Annex 3 में. Annex 3 में जो ये बोले हैं Annex 3 देव कुमार राय हैं इन्फॉर्मेंट. आप यही प्रैक्टिस ये बोलते हैं ये Mr. Counsel, you have been a practitioner of this court. Yes, my lord. For how long? More than 20 years, my lord. You understand the decorum of the court. Yes, my lord. Huh? Yes, my lord. Now somebody withdrew the application on behalf of the petitioner. You say that you were not there, right? Yes. The ground that you have taken here is new facts of compromise. Yes, my lord. Now, can that be a ground for renewing your prayer for bail after you have sought permission to withdraw, for you to surrender before the court below? And especially, my lord, supplementary investigation. और दूसरा कि after the rejection of the bail, the case has been committed to the court of sessions and trial has proceeded. My lord, not in my case. Other cases में जो कस्टडी में जा चुके थे उनके केस में चार्जशीट सबमिट हुआ है. You are not surrendering. नहीं हुजूर, हमारे केस में सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. We'll direct the superintendent of police to take you into custody straight away. My lord, I have written in paragraph so my lord, हुजूर पढ़ के सुनाते हैं. इसमें हुजूर ये कहते हैं, ये खुद कह रहे हैं और ये स्टेटमेंट भी आया है इसमें, डायरी से आया हुजूर, that during the course of supplementary investigation against the petitioner in the case of
petitioner and others. This case is at present pending in the court of Sri Shambhu Kumar Gupta, London Judicial Magistrate First Class Muzaffarpur, in connection with our IPS case number 7 my lord. इनके केस में अदर के केस में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पुलिस सबमिटेड चार्जशीट इन द कोर्ट ऑफ शंभू कुमार गुप्ता स्वेंट्सो और उस पर उन लोगों का ट्रायल हो रहा है। उस ट्रायल के दौरान हुजूर आया है हमारे बारे में कि हमने नहीं कि आया है कि हमने कोई घटना नहीं किया है। हुजूर ये स्टेटमेंट हम पढ़ के हुजूर को सुना देते हैं। सुन लिया, समझ लिया, आपको इसको सुना, आपने बोल दिया, हमने सुन लिया, पढ़ने की स्पेशल जरूरत जी हुजूर। इसमें स्पष्ट कहे तो पेज 24 पर हुजूर देख लिया जाए। इसमें पेज 24 पर हुजूर पढ़ के सुनाते। ये कहे हैं अभियुक्तगण जिस पर मैंने केस किया है नीचे में हुजूर प्रति परीक्षण में ये सभी लोग घर के भतीजा हैं। मेरा पूर्व से इन लोग के साथ जमीन का विवाद चल रहा है। घटना तिथि के दिन जमीनी विवाद के कारण ही गाली गलौज और कहासुनी हुआ था। जान मारने के नियत से कोई मारपीट नहीं, मुकदमा सुलह कर लिया है, कंप्रोमाइज भी हो गया हुजूर। और ये विक्टिम जिनके बारे में कह रहे हैं कि उनको मारा है उनका हुजूर स्टेटमेंट है, उसका भी लगाया है नेक्स्ट 4 में हुजूर पेज 25 पर है। उसमें कह रहे हैं ऐसी बात क्रॉस एग्जामिनेशन बोल रहे हैं इनको हॉस्टाइल किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं कि मैंने पुलिस के समक्ष ये बयान दिया था कि अभियुक्तगण सूचक को गाली गलौज कर रहे थे। राजेश राय और बबलू राय जान मारने के नियत से फरसा से देव कुमार राय के सिर पर मार दिए। सिर फटकर खून बहने लगा। पानवती देवी सो मैं बचाने गया, मैं तो अभियुक्तगण हम लोग को मारकर जख्मी किया। ऐसी बात नहीं है कि मैं अभियुक्तगण के मेल में आकर सच्ची बात को छिपा रहा हूँ। ये उन्होंने हुजूर कहा इनको पक्षद्रोही घोषित किया गया है। हॉस्टाइल दे हैव बीन मेड, ही हैज बीन मेड हॉस्टाइल माय लॉर्ड। और हुजूर कंप्रोमाइज भी इन लोगों ने कर लिया है। ये नेक्स्ट 5 है हुजूर लगा हुआ कि इसका पारथी का किया कि सुलह सलाह हो जाने के कारण दोनों पक्ष आगे मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है और इस केस के सूचक एवं जख्मी आगे मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं, नहीं गवाही देना चाहते हैं। ये दोनों हुजूर जैसे पेज 27 पर है, कंप्रोमाइज भी हो गया हुजूर, सब हो गया। यही तो बड़ा पोजिशन है हुजूर का, जो आदेश हो स्वीकार है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार सिन्हा। Heard Mr. Pradeep Kumar Sinha, learned advocate for the petitioner and so and so for the state. The prayer for bail of the petitioner was earlier. The application for anticipatory bail of the petitioners was earlier withdrawn by order dated 14/9/2021. Mr. Pradeep Kumar Sinha, learned advocate, has filed the instant petition on the ground that he was not the advocate at the time when the petition was withdrawn and that the petitioners did not give any instruction to the earlier lawyer to withdraw the petition. The practice of filing such petitions is highly deprecated. Nonetheless, since Mr. Sinha was not appearing on the last occasion, this court has given him a hearing. The petitioner seeks bail in anticipation of his arrest in connection with or IPS case number so and so, dated so and so, instituted for the offences under section so and so. The reason for the petitioner to renew his prayer for anticipatory bail are that no specific act of accusation, no specific act of assault has been attributed against him, and there is a family dispute, and also the fact that the petitioner happens to be an agnate of the informant. He further submits that during the trial of the other accused persons who surrendered to the process of law, nothing concrete could be collected against the petitioner, and the informant has now chosen to compound the case with the petitioner. None of these grounds weigh with this court for granting anticipatory bail to the petitioner, who ought to have surrendered before the court below and sought bail. This court does not know whether the petitioner has been declared an absconder. In any view of the matter, this court is not at all inclined to entertain this application. The prayer for anticipatory bail is rejected. ये एसपी को ऑर्डर करें आपको अरेस्ट करने को?
या आप नहीं, सरेंडर करेंगे? नहीं जब सेंटर कर जाएंगे हुजूर। The petitioner ought to surrender before the court below, positively within a period of 4 weeks, हुजूर in कुछ which हमारे अगेंस्ट पे हुजूर कुछ नहीं आपके है। अगेंस्ट कुछ नहीं लिखा है, हमने आपकी प्रैक्टिस को डेप्रिकेट किया है। आपसे हमने पूछा, आप 20 साल से ऊपर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिस इज नॉट द वे यू ऑपरेट इन द कोर्ट, दिस इज नॉट द वे। हुजूर वो लिखिए, the petitioner must surrender before the court below and seek bail. चलिए नेक्स्ट।